Lesson 12. The Gift of the Magi. अक्लमंदों का तोहफा। Theme. Della and Jim had great love for each other and could not think of celebrating Christmas without presenting the gifts. But they had no money, so they sold their most beautiful and valuable things to buy gifts, which proved too nice to use on the occasion. The story reveals that exchange of gifts on the holy occasions makes life most lovable. डेला और जिम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और ईद पर एक दूसरे को तोहफा दिए बगैर नहीं रह सकते थे। लेकिन उनके पास इस ईद पर पैसे नहीं थे, तो उन्होंने तोहफे खरीदने के लिए अपनी मलकियत में मौजूद खूबसूरत और कीमती तरीन चीज़ें बेच दीं। लेकिन वो तोहफे इतने कीमती साबित हुए कि वो क्रिसमस पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। कहानी आश्कार करती है कि मुक़द्दस मौक़ों पर तोहफे देना ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। O. Henry was the pen name of William Sidney Porter, 1862 to 1910, one of the most famous American short story writers. He lived in extreme poverty in New York, writing short stories to support himself. His tragic life gave him a profound knowledge of human character, especially of dwellers in big cities whose life is full of misfortunes. As a storyteller, he is remarkable for his ingenuity in the use of ironical coincidences and for his skillful plots. In 1918, the American Society of Letters honored his name by founding the O. Henry Memorial Award, which gives an annual prize for the best American short story. $1.87. That was all. She had put it aside, 1 cent and then another, in her careful buying of meat and other food. Della counted it 3 times. $1.87. And the next day would be Christmas. There was nothing to do but fall on the bed and cry. So, Della did it. While the lady of the home is slowly growing quieter, we can look at the home. Furnished rooms at a cost of $8 a week. There is little more to say about it. In the hall below was a letterbox too small to hold a letter. There was an electric bell, but it could not make a sound. Also there was a name beside the door, Mr. James Dillingham Young. $1.87 ये सब कुछ था। उसने गोश्त और दीगर खाने की चीज़ें एहतियात से खरीदते हुए इन पैसों की बचत की थी। 1 सेंट और फिर दूसरा और फिर दूसरा। डेला ने उसे 3 बार गिना। $1.87 और अगले दिन क्रिसमस होगा। बिस्तर पर गिरकर रोने के सिवा कुछ न था, तो डेला ने ये किया। जबकि घर की खातून आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती जा रही है, हम घर को देख सकते हैं। हर हफ्ते $8 की लागत से फर्निश्ड कमरे। इसके बारे में कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हॉल में एक लेटर बॉक्स था जो एक खत रखने के लिए बहुत छोटा था। बिजली की एक घंटी थी, लेकिन वो आवाज़ नहीं दे सकती थी। दरवाजे के साथ एक नाम भी था, मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग। When the name was placed there, Mr. James Dillingham Young was being paid $30 a week. Now, when he was being paid only $20 a week, the name seemed too long and important. It should perhaps have been Mr. James D. Young. But when Mr. James Dillingham Young entered the furnished rooms, his name became very short indeed. Mrs. James Dillingham Young put her arms warmly about him and called him Jim. You have already met her. She is Della. Della finished her crying and cleaned the marks of it from her face. She stood by the window and looked out with no interest. Tomorrow would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which to buy Jim a gift. She had put aside as much as she could for months, with this result. जब ये नाम वहाँ लिखा गया, तो मिस्टर जेम्स डिलिंघम यंग को हर हफ्ते $30 अदा किए जा रहे थे। अब जब उसे हफ्ते में सिर्फ $20 अदा किए जा रहे थे, तो ये नाम बहुत तवील और अहम लग रहा था। ये शायद होना चाहिए था मिस्टर जेम्स डी यंग।
लेकिन जब मिस्टर जेम्स डेलिंघम यंग फर्निश्ड कमरों में दाखिल हुए तो उनका नाम वाकई बहुत छोटा हो गया। मिसेस जेम्स डेलिंघम यंग ने गर्मजोशी से उसके गिर्द बाजू डाले और उसे कहा, जिम, आप पहले ही इससे मिल चुके हैं, वो डेला है। डेला ने अपना रोना ख़त्म किया और अपने चेहरे से उसके निशानात साफ़ किए। वो खिड़की के पास खड़ी थी और बेतवज्जोही से बाहर देखने लगी। कल क्रिसमस का दिन होगा और उसके पास सिर्फ 1.87 डॉलर थे जिससे जिम को तोहफ़ा ख़रीद कर देना था। इस काम के लिए महीनों जितनी बचत हो सकती थी वो करती रही थी। $20 a week is not much. Everything had cost more than she had expected. It always happened like that. Only $1.87 to buy a gift for Jim. Her Jim. She had had many happy hours planning something nice for him. Something nearly good enough. Something almost worth the honor of belonging to Jim. There was a looking glass between the windows of the room. Perhaps you have seen the kind of looking glass that is placed in $8 furnished rooms. It was very narrow. A person could see only a little of himself at a time. However, if he was very thin and moved very quickly, he might be able to get a good view of himself. Della, being quite thin, had mastered this art. हफ्ते में $20 ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ की कीमत उसकी तवक्को से ज़्यादा थी। हमेशा ऐसा ही होता था। जिम के लिए तोहफ़ा ख़रीदने के लिए सिर्फ 1.87 डॉलर। उसका जिम। उसने उसके लिए कुछ उम्दा करने की मंसूबाबंदी करने के लिए कई खुशगवार घंटे गुजारे थे। कुछ करीब करीब काफ़ी अच्छा, कोई चीज़ जो जिम के शायाने शान उसकी मलकियत कहलाए जाने के काबिल। कमरे की खिड़कियों के दरमियान एक शीशा था। शायद आपने उस किस्म का लुकिंग ग्लास देखा होगा जो $8 के फर्निश्ड कमरों में रखा जाता है। ये बहुत तंग था। एक शख्स एक वक्त में अपने आप को थोड़ा ही देख सकता था। ताहम अगर वो बहुत पतला था और बहुत तेज़ी से हरकत करता है तो वो अपने आप का एक अच्छा नज़ारा हासिल करने के काबिल हो सकता है। डेला काफ़ी दुबली पतली होने की वजह से इस फ़न में महारत हासिल कर चुकी थी। Suddenly she turned from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brightly, but her face had lost its color. Quickly she pulled down her hair and let it fall to its complete length. The James Dillingham Youngs were very proud of two things which they owned. One thing was Jim's gold watch. It had once belonged to his father. And, long ago, it had belonged to his father's father. The other thing was Della's hair. If a queen had lived in the rooms near theirs, Della would have washed and dried her hair where the queen could see it. Della knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts. अचानक वो खिड़की से मुड़कर शीशे के सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे का रंग ख़त्म हो चुका था। उसने जल्दी से अपने बालों को नीचे किया और उन्हें पूरी लंबाई तक गिरने दिया। जेम्स डेलिंघम यंग्स को दो चीज़ों पर बहुत फ़ख्र था जो उनकी मलकियत थीं। एक चीज़ जिम की सोने की घड़ी थी। ये कभी उसके बाप की थी और बहुत पहले ये उसके वालिद के वालिद की थी। दूसरी चीज़ डेला के बाल थे। अगर कोई मलका उनके करीब के कमरों में रहती तो डेला अपने बालों को धोकर खुश करती जहां मलका उसे देख सकती थी। डेला जानती थी कि उसके बाल किसी भी मलका के ज़ेवरात और तोहफ़े से ज़्यादा खूबसूरत हैं। If a king had lived in the same house, with all his riches, Jim would have looked at his watch every time they met. Jim knew that no king had anything so valuable. So now Della's beautiful hair fell about her, shining like a falling stream of brown water. It reached below her knee. It almost made itself into a dress for her. And then she put it up on her head again, nervously and quickly. Once she stopped for a moment and stood still while a tear or two ran down her face. She put on her old brown coat. She put on her old brown hat. With the bright light still in her eyes, she moved quickly out the door and down to the street. अगर कोई बादशाह अपनी तमाम दौलत के साथ एक ही घर में रहता
तो जिम जब भी उनसे मिलता तो अपनी घड़ी को देखता। जिम जानता था कि किसी बादशाह के पास इतनी कीमती चीज़ नहीं थी, तो अब डेला के खूबसूरत बाल उसके गिर्द गिरे पूरे पानी की गिरती हुई नदी की तरह चमक रहे थे। ये उसके घुटनों के नीचे तक पहुंचते थे। बाल तकरीबन उसके लिए लिबास बन गए थे, और फिर उसने घबराकर और जल्दी से उन्हें दोबारा अपने सर पर रखा। एक बार वो एक लम्हे के लिए रुकी और खामोश खड़ी रही, जबकि एक दो आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। उसने अपना पुराना भूरा कोट पहन लिया, उसने अपनी पुरानी भूरी टोपी पहन ली। आंखों में अभी तक चमकदार रोशनी के साथ वो तेज़ी से दरवाजे से बाहर और नीचे गली की तरफ चली गई। Where she stopped, the sign said, Mrs. Sophony. Hair articles of all kinds. Up to the second floor Della ran, and stopped to get her breath. Mrs. Sophony, large, too white, cold-eyed, looked at her. Will you buy my hair? Asked Della. I buy hair, said Mrs. Sophony. Take your hat off and let me look at it. Down fell the brown waterfall. $20, said Mrs. Sophony, lifting the hair to feel its weight. Give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours seemed to fly. She was going from one shop to another, to find a gift for Jim. जहां वो रुकी, निशान ने कहा, मिसेस सोफ्रोनी, बालों का हर तरह का सामान। दूसरी मंजिल तक डेला भागी और सांस लेने के लिए रुक गई। मिसेस सोफ्रोनी, बड़ी सी खातून, बहुत गोरी सर्द आंखों वाली, उसकी तरफ देखने लगी। क्या आप मेरे बाल खरीदोगी? डेला ने पूछा। मैं बाल खरीदती हूँ, मिसेस सोफ्रोनी ने कहा। अपनी टोपी उतारो और मुझे इन्हें देखने दो। नीचे भूरी आबशार गिरी। $20। मिसेस सोफ्रोनी ने वजन को महसूस करने के लिए बाल उठाते हुए कहा। डेला ने कहा, ये मुझे जल्दी से दो। ओह, और अगले 2 घंटे उड़ते दिखाई दे रहे थे। वो जिम के लिए तोहफा ढूंढने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जा रही थी। She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in any of the shops, and she had looked in every shop in the city. It was a gold watch chain, very simply made. Its value was in its rich and pure material. Because it was so plain and simple, you knew that it was very valuable. All good things are like this. It was good enough for the watch. As soon as she saw it, she knew that Jim must have it. It was like him. Quietness and value. Jim and the chain both had quietness and value. She paid $21 for it. And she hurried home with the chain and 87 cents. उसे आखिरकार मिल गया। ये यकीनी तौर पर जिम के लिए बनाया गया था और किसी और के लिए नहीं। किसी भी दुकान में इस जैसा कोई दूसरा नहीं था, और उसने शहर की हर दुकान पर नज़र डाली थी। ये एक सोने की घड़ी की जंजीर थी, जो बहुत सादा बनाई गई थी। उसकी कीमत उसके भरपूर और खालिस मवाद में थी। क्योंकि ये बहुत सीधा और सादा था, आपको पता होता है कि ये बहुत कीमती है। तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ये वॉच के लिए काफ़ी अच्छा था। जैसे ही उसने उसे देखा, वो जान गई कि जिम के पास ज़रूर होना चाहिए। ये उसकी तरह था, खामोश और कीमती। जिम और चैन दोनों में खामोशी और कदर थी। उसने उसके लिए $21 अदा किए थे, और वो जंजीर और 87 सेंट लेकर जल्दी से घर चली गई। With that chain on his watch, Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. Though the watch was so fine, it had never had a fine chain. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. When Della arrived home, her mind quieted a little. She began to think more reasonably. She started to try to cover the sad marks of what she had done. Love and large-hearted giving, when added together, can leave deep marks. It is never easy to cover these marks, dear friends, never easy. अपनी घड़ी पर इस जंजीर के साथ जिम अपनी घड़ी को देख सकता था और वक्त सीख सकता था कि वो कहीं भी हो। अगरचे घड़ी इतनी ठीक थी, इसमें कभी भी ठीक चैन नहीं था। वो कभी कभी उसे बाहर निकाल कर सिर्फ इस वक्त देखता था
जब कोई उसे ऐसा करते हुए देख ना सकता था। जब डेला घर पहुंची तो उसका दिमाग थोड़ा सा साकित हो गया। वो मज़ीद माकूलियत से सोचने लगी। वो अपने किए के दुख भरे निशानात छुपाने की कोशिश करने लगी। मोहब्बत और बड़े दिल से देना जब एक साथ शामिल किए जाएं तो गहरे निशान छोड़ सकते हैं। उन निशानात का अहाता करना कभी भी आसान नहीं होता, प्यारे दोस्त, कभी भी आसान नहीं। Within 40 minutes her head looked a little better. With her short hair, she looked wonderfully like a schoolboy. She stood at the looking glass for a long time. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he looks at me a second time, he'll say I look like a girl who sings and dances for money. But what could I do? Oh! What could I do with $1.87? At 7, Jim's dinner was ready for him. Jim was never late. Della held the watch chain in her hand and sat near the door where he always entered. Then she heard his step in the hall and her face lost color for a moment. She often said little prayers quietly, about simple everyday things. 40 मिनट के अंदर उसका सर कदरे बेहतर नजर आने लगा। अपने छोटे बालों के साथ वो हैरत अंगेज तौर पर एक स्कूल के लड़के की तरह लग रही थी। वो काफ़ी देर तक शीशे के पास खड़ी रही। अगर जिम मुझे नहीं मारता, उसने अपने आप से कहा, इससे पहले कि वो दूसरी बार मेरी तरफ देखे, वो कहेगा कि मैं उस लड़की की तरह लग रही हूँ जो पैसे के लिए गाती और नाचती है। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? ओह, मैं $1 और 87 सेंट का क्या कर सकती हूँ? 7 बजे जिम का डिनर उसके लिए तैयार था। जिम ने कभी देर नहीं की। डेला ने हाथ में घड़ी की चैन पकड़ी और दरवाजे के पास बैठ गई, जहाँ से वो हमेशा दाखिल होता था। फिर उसने हॉल में उसके कदम की आवाज़ सुनी और एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो अक्सर रोज़मर्रा की सादा चीज़ों के बारे में खामोशी से छोटी-छोटी दुआएं मांगती थी। And now she said, please God, make him think I'm still pretty. The door opened and Jim stepped in. He looked very thin and he was not smiling. Poor fellow, he was only 22, and with a family to take care of. He needed a new coat and he had nothing to cover his cold hands. Jim stopped inside the door. He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird. His eyes looked strangely at Della, and there was an expression in them that she could not understand. It filled her with fear. It was not anger, nor surprise, nor anything she had been ready for. He simply looked at her with that strange expression on his face. Della went to him. Jim, dear, she cried, don't look at me like that. I had my hair cut off and sold it. I couldn't live through Christmas without giving you a gift. और अब उसने कहा, खुदा की मेहरबानी उसे ये समझाए कि मैं अब भी खूबसूरत हूँ। दरवाज़ा खुला और जिम अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत पतला लग रहा था और वो मुस्कुरा नहीं रहा था। गरीब साथी, वो सिर्फ 22 साल का था और एक ख़ानदान के साथ देखभाल करने के लिए उसे एक नए कोट की ज़रूरत थी और उसके पास अपने ठंडे हाथों को ढांपने के लिए कुछ नहीं था। जिम दरवाजे के अंदर रुक गया। वो शिकारी कुत्ते की तरह खामोश था जब वो परिंदे के करीब होता है। उसकी आंखें अजीब से डेला को देख रही थीं और इनमें एक ऐसा तासर था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसने उसे खौफ से भर दिया। ये गुस्सा नहीं था, ना हैरत और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए वो तैयार थी। उसने बस चेहरे पर अजीब तासरात लिए उसे देखा। डेला उसके पास गई। जिम प्यारे, वो पुकार कर बोली, मुझे इस तरह मत देखो। मैंने अपने बाल काट कर बेच दिए। मैं आपको तोहफा दिए बगैर क्रिसमस पर नहीं रह सकती थी। My hair will grow again. You won't care, will you? My hair grows very fast. It's Christmas, Jim. Let's be happy. You don't know what a beautiful nice gift I got for you. You've cut off your hair? Asked Jim slowly. He seemed to labor to understand what had happened. He seemed not to feel sure he knew. Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me now? I'm me, Jim. I'm the same without my hair. Jim looked around the room. You say your hair is gone, he said.
You don't have to look for it, said Della. It's sold, I tell you, sold and gone, too. It's the night before Christmas, boy. Be good to me, because I sold it for you. Maybe the hairs of my head could be counted, she said, but no one could ever count my love for you. Shall we eat dinner, Jim? मेरे बाल फिर बढ़ेंगे, आपको परवाह नहीं होगी। क्या होगी? मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये क्रिसमस है जिम, आओ खुश रहें। आप नहीं जानते कि मैंने आपके लिए कितना अच्छा और खूबसूरत तोहफ़ा लिया है। तुमने बाल काट दिए हैं? जिम ने आहिस्ता से पूछा। ऐसा लगता था कि वो ये समझने के लिए मेहनत कर रहा है कि क्या हुआ था। ऐसा लगता था कि उसे यकीन नहीं है कि वो जानता है। उन्हें काट कर बेच दिया, डेला ने कहा। क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? मैं वही हूँ जिम, मैं अपने बालों के बगैर वैसी ही हूँ। जिम ने कमरे में चारों तरफ देखा। तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने कहा। आपको इसे तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, डेला ने कहा। ये फ़रोख्त हो गए, मैं आपको बताती हूँ, बिक चुके और जा भी चुके। ये क्रिसमस से पहले की रात है लड़के, मेरे साथ अच्छा सलूक करो क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बेच दिया है। हो सकता है कि मेरे सर के बालों को शुमार किया जा सके, उसने कहा, लेकिन आपके लिए मेरी मोहब्बत का शुमार कोई नहीं कर सकता। क्या हम रात का खाना खाएं, जिम? Jim put his arms around his Della. For 10 seconds, let us look in another direction. $8 a week or $1,000,000 a year, how different are they? Someone may give you an answer, but it will be wrong. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. My meaning will be explained soon. From inside the coat, Jim took something tied in paper. He threw it upon the table. I want you to understand me, Dell, he said. Nothing like a haircut could make me love you any less. But if you'll open that, you may know what I felt when I came in. White fingers pulled off the paper. And then a cry of joy, and then a change to tears. जिम ने अपनी डेला के गिर्द बाजू रखे। 10 सेकंड के लिए आइए किसी और सम्मत देखते हैं। $8 एक हफ्ते या $1,000,000 एक साल, वो कितने मुख्तलिफ हैं। कोई आपको जवाब दे सकता है, लेकिन ये गलत होगा। बुज़ुर्ग लोग कीमती तोहफ़े लाए, लेकिन वो उनमें से नहीं था। मेरा मतलब जल्द ही वाज़ेह हो जाएगा। कोट के अंदर से जिम ने कागज़ में बंधी कोई चीज़ निकाली। उसने उसे मेज़ पर फेंक दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, डेल, उसने कहा। बाल कटवाने जैसी कोई चीज़ मेरे आपसे प्यार में कमी नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप इसे खोलेंगी तो आपको मालूम होगा कि मैंने अंदर आने पर क्या महसूस किया था। सफ़ेद उंगलियों ने कागज़ उतार दिया, और फिर खुशी का रोना, और फिर आंसुओं में तब्दीली। For there lay the combs that Della had seen in a shop window and loved for a long time. Beautiful combs, with jewels, perfect for her beautiful hair. She had known they cost too much for her to buy them. She had looked at them without the least hope of owning them. And now they were hers, but her hair was gone. The James Dillingham Youngs were very proud of two things which they owned. One thing was Jim's gold watch. It had once belonged to his father. And, long ago, it had belonged to his father's father. The other thing was Della's hair. If a queen had lived in the rooms near theirs, Della would have washed and dried her hair where the queen could see it. Della knew her hair was more beautiful than any queen's jewels and gifts. क्योंकि वहाँ कंघी पड़ी थी, वो कंघी जो डेला ने दुकान की खिड़की में देखी थी और काफ़ी अरसे से उसे पसंद थी। जेवरात के साथ खूबसूरत कंघी, उसके खूबसूरत बालों के लिए बेहतरीन है। वो जानती थी कि उन्हें ख़रीदने के लिए उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। उसने उनके मालिक होने की कम से कम उम्मीद के बगैर उनकी तरफ देखा था, और अब वो उसके थे, लेकिन इसके बाल ख़त्म हो चुके थे। उसने उन्हें अपने दिल से थाम लिया और आखिरकार नज़र उठाकर कहने में कामयाब हो गई, मेरे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिम। और फिर वो उछल पड़ी और पुकारा, ओह ओह। जिम ने अभी तक उसका खूबसूरत तोहफ़ा नहीं देखा था। उसने उसे अपने खुले हाथ में थाम लिया। सोना नरमी से चमक रहा था, जैसे उसकी अपनी गर्म और प्यारी रूह से। क्या ये कामिल नहीं है, जिम?
मैंने उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर छान मारा। अब आपको दिन में 100 बार अपनी घड़ी को देखना पड़ेगा। Give me your watch. I want to see how they look together. Jim sat down and smiled. Della, said he, let's put our Christmas gifts away and keep them a while. They're too nice to use now. I sold the watch to get the money to buy the combs. And now I think we should have our dinner. मुझे अपनी घड़ी दो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो एक साथ कैसे नजर आते हैं। जिम बैठा और मुस्कुराया। डेला, उसने कहा, आइए अपने क्रिसमस के तोहफ़े को थोड़ी देर के लिए दूर रखें, वो इतने अच्छे हैं कि अभी इस्तेमाल नहीं हो सकते। कंघी खरीदने के पैसे हासिल करने के लिए मैंने घड़ी बेच दी, और अब मुझे लगता है कि हमें रात का खाना खाना चाहिए। The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men, who brought gifts to the newborn Christ child. They were the first to give Christmas gifts. Being wise, their gifts were doubtless wise ones. And here I have told you the story of two children who were not wise. Each sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other. But let me speak a last word to the wise of these days. Of all who give gifts, these two were the most wise. Of all who give and receive gifts, such as they are the most wise. Everywhere they are the wise ones. They are the Magi. बूढ़े बुजुर्ग लोग, जैसा कि आप जानते हैं, अक्लमंद आदमी थे, हैरत अंगेज तौर पर अक्लमंद, जो नौज़ायदा मसीह बच्चे के लिए तोहफ़े लाते थे। वो सबसे पहले क्रिसमस के तोहफे देने वाले थे। अक्लमंद होने के नाते उनके तोहफे बिलाशुबह अक्लमंद थे। और यहाँ मैंने आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई है जो अक्लमंद नहीं थे। हर एक ने दूसरे के लिए तोहफा खरीदने के लिए सबसे कीमती चीज़ बेची। लेकिन मुझे इन दिनों के अक्लमंदों से एक आखिरी बात कहने दो। तोहफे देने वालों में ये दोनों सबसे ज़्यादा अक्लमंद थे। तोहफ़े देने और वसूल करने वालों में से जैसे कि वो सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं, हर जगह वही अक्लमंद हैं। वो बुज़ुर्ग लोग हैं। Happy learning!